Today we are going to capture a new development that is getting launched in New Gurgaon in Sector 86. This project is coming from a A-grade developer that is Emaar. The name of this project is Emaar Serenity Hills. हम इसको break down करेंगे and we will try to understand what this project has to offer to the clients और क्या आपको इसके अंदर invest करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. At the same time, can it be a good option for an end user to buy it? Because the ticket size is very lucrative. It starts from 2.8 crores. That is a 3 BHK. So let's get into it and understand it. इसी वीडियो के अंदर मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ. We are not influencer. We are majorly running a knowledge platform. We want to educate the people about the real estate market of Gurgaon and we want to tell them what is the reality and every product क्या क्या एलिमेंट वो प्रोजेक्ट लेके आता है आपके लिए. तो डू फॉलो अस एंड सब्सक्राइब अस ऑन आवर चैनल. Emaar came into India in 2006 and they started their operations in India in a joint venture with NGF. इन्होंने multiple projects को launch किया. They had their operations across India. They launched their projects in Gurgaon, Delhi, Jaipur, Indore, Lucknow, Mohali, Amritsar. But their dominant position was majorly into Gurgaon region and they had a huge land parcel across Gurgaon region. But in 2016 they planned to move alone. Now in 2016 के अंदर Emaar Dubai kicks in और ये JV खत्म होता है और Emaar Dubai independently इस कंपनी को रन करना स्टार्ट करता है. और इमार के टेक ओवर के बाद देयर हैव बीन फ्यू रेजिडेंशियल लॉन्चेस दैट हैज बीन डन बाय द कंपनी इन गुड़गांव रीजन. फर्स्ट वाज इमार डिजी होम्स जिसका पोजीशन आ चुका है. द प्रोजेक्ट हैज गिवन अ ह्यूज एप्रिसिएशन टू देयर इन्वेस्टर्स. द सेकंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट दैट वाज लॉन्च्ड बाय द कंपनी वाज इमार अर्बन ओएसिस एंड द थर्ड वाज इमार अमेरिस. नाउ द कंपनी इज लॉन्चिंग द बिगेस्ट ग्रुप हाउसिंग ऑफ न्यू गुड़गांव दैट इज इमार सेक्टर 86 Serenity Hills. It's going to be around 26 acres of development and they are going to be around 1800 apartments. This particular development is going to be divided into two phases, wherein the first phase is going to have around 900 apartments and the other 900 apartments are going to be launched in phase 2. Now before we discuss on the product, let's understand the location first. तो location ये sector 86 में पड़ती है. तो ये वाला जो project है, जब आप NH8 से right लेते हैं और आप DLF Ultima के लिए चलते हैं तो DLF Ultima लेफ्ट साइड पे आता है. DLF Ultima को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट साइड पे बेस्टेक की प्रॉपर्टी आती है. अब उसको क्रॉस करने के बाद आप जैसे ही आगे चलते हैं तो 86 सेक्टर आता है. अब 86 सेक्टर में दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी देयर. हम 86 सेक्टर के अंदर ही एक और प्रोजेक्ट भी देखते हैं दैट इज माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग. सो दिस डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी नियर टू दैट पर्टिकुलर डेवलपमेंट एंड इसका जो लोकेशन होगा इट्स सुपर्बली प्लेस्ड बिकॉज़ दिस इज गोइंग टू हैव टू एक्सेस टू द प्रोजेक्ट. वन इज गोइंग टू बी फ्रॉम मेन 75 मीटर रोड, द अनदर वन इज गोइंग टू बी 24 मीटर रोड जस्ट नेक्स्ट टू माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग. तो इस लोकेशन का एडवांटेज एक मैंने आपको बताया कि ये अल्टिमा वाली रोड पे ही है. व्हेन यू टेक ए राइट टर्न फ्रॉम द NH8 आप इस रोड पे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ये डेवलपमेंट आएगी आफ्टर DLF Ultima. बट एट द सेम टाइम आपको इसका एक्सेस मिलता है फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे आल्सो. तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे से भी डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट पे आ सकते हैं. सो देयर इज अ द्वारका एक्सप्रेसवे लिंक रोड. तो मैं ये आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं. फ्रॉम हियर यू टेक राइट और लेफ्ट टर्न, आप स्ट्रेट आते हैं. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू सी मैत्री किरण हाई स्कूल. आप उसको क्रॉस करके स्ट्रेट चलते जाते हैं और एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है और जंक्शन के बगल में ही पिरामिड अर्बन होम्स हैं, दैट्स अफोर्डेबल हाउसिंग. उसके क्रॉस करते ही राइट साइड पे आप जितना भी लैंड पार्सल देख रहे हैं, there's around 26 acres of land parcel where Emaar is coming up with their biggest group housing till date by Emaar in Gurgaon, 25.9 acres and in fact this is going to be one of the biggest group housing of New Gurgaon. इसका जो central green ही होने वाला है that is going to be of 8 acres. Now let's discuss on to the product. So 25.9 acres is the development, 1800 are going to be apartment. जो configuration होने वाली है 3 और 4 BHKs की होने वाली है इसके अंदर. It is going to have a central green of around 8 acres. इसका जो ground footprint होगा, the construction footprint is going to be only 13%. मतलब ये जो टावर्स बनेंगे वो सिर्फ 13% को ही कवर करेंगे 26 एकड़ में. Rest of the areas are going to be open areas or the green areas. The clubhouse is going to be approximately around 1.25 to 1.5 lakhs square feet. There is going to be no EWS within this community. एक बहुत important चीज मैं इससे पहले बताना चाहता हूँ कि it is a joint development. It's a joint development between Emaar and Pyramid. So Pyramid is the landowner of this particular project and Emaar is going to develop it, market it and sell it. So Pyramid का जो दूसरा प्रोजेक्ट है अक्रॉस द रोड उसके अंदर ही इन्होंने EWS को ले लिया. सो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज नॉट गोइंग टू हैव इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हाउसिंग विद इन इट. दैट इज अ की USP ऑफ दिस पर्टिकुलर
product. Now the height of the towers is going to range from ground plus 35 floor to ground plus 39 floors. There are going to be 4 apartments to a floor. There's going to be 2 basements. The FAR of this particular project is 2.65. जहाँ पे आज की डेट में 3.5 के FAR पे मेजरली डेवलपमेंट हो रहा है और जो डेंसिटी है वो बहुत हाई है. यहाँ पे FAR is only 2.65. जो पर एकड़ आपके यूनिट्स आते हैं इसमें that is only 69. So the density is not high. It is going to be very open development. Only 1800 apartments and 26 acres. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस डेवलपमेंट की ऐसे है कि जो मास्टर प्लानिंग ओवरऑल इमार ने करी है, none of the tower is close to another tower, so there is going to be a privacy across the units or across the apartments you are buying, and majority of the apartments are going to face towards the internal central green that is going to be of around 8 acres. And in fact, जब हम ओवरऑल प्लानिंग मास्टर प्लानिंग के बारे में जब बात कर रहे हैं तो टावर्स को ऐसे प्लेस किया है कि you get most of the units are getting the sunlight throughout the day, and these towers are very good ventilated. In fact, इसके अंदर internal needs के लिए commercial भी आएगा, and there is going to be a mini school just next to it. इसी के साथ इसके अंदर 13 towers होंगे where 1800 apartments are going to be there. 7 टावर को अभी लॉन्च किया जाएगा. Rest of the towers are going to be launched in phase 2. तो डेवलपर इसमें प्राइस की एक जर्नी देने वाला है. So the phase 1 को भी मल्टीपल प्राइसेस पे लॉन्च किया जाएगा. So initially there would be a pre-launch, then launch, then post-launch, then there is going to be a phase 2. So right now जिस प्राइस पॉइंट पे इसको लॉन्च किया जाएगा, the developer is going to take the price upward. So the people who are investing into this project at an earlier stage is going to make decent amount of money. इसमें जैसे मैंने आपको बताया 3 BHKs and 4 BHKs की typologies होंगी. 3 BHK is going to be the dominant inventory. In fact, 3 BHKs are going to be around 75% of the total inventory of this particular group housing. Now when we come on to the sizes, there are going to be multiple sizes within this community. So the sizes are going to start from 1700 square feet, that is going to be 3 BHK. The another size of 3 BHK is going to be around 2300 square feet, and the 4 BHKs are somewhere around 3200 square feet. Now coming on to the pricing and the payment plan. So the expected pricing of this particular development is going to be somewhere around 2.7 to 2.8 crores starting. This is going to be all inclusive pricing. The additional would be only the GST, and there might be some variation in terms of PLCs. But it's going to be very competitive pricing. A grade developer, Emaar, 3 BHK, 26 acres of development, where you're getting 8 acres of central green. The clubhouse is going to be of around 1.25 lakh square feet. The pricing of these apartments are starting from just 2.7 to 2.8 crores. So it's a steal. It's a buy. It's a great opportunity for the end users who are not able to buy a A-grade developer with a very good master planning in Gurgaon. This becomes a right opportunity to get into it. In fact, even for the investors, they can park their money here. Obviously, you are going to make a decent amount of appreciation if you hold it for a longer span of time. Payment plan, it's still under discussion. The Emaar management has still not announced the payment plan, but it would be a CLP or a flexi CLP, which is going to be easy payment plan for the market. Once this project is officially launched, all the banks are going to be on board for the funding. मैं इस micro market में इसको किसके साथ compare कर सकता हूँ? We can compare it with DLF Ultima. DLF Ultima operate करता है 17 से 18,000 रुपए per square feet के रेट के अंदर, जिसमें आज in one go you have to make all the payments to the developer. यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं. There is a staggered payment, and the possession of this particular project is going to happen in next 4 years. DLF Ultima is a ready to move in property. आज अगर उसको आप बाय करते हो तो आज पूरा का पूरा पेमेंट देना पड़ता है. इसको अगर आप बाय करते हो, you get a time of 4 years to make these payments. The future trajectory of this particular product is very good. You are going to get a very good appreciation in this particular product. इस माइक्रो मार्केट के अंदर ए ग्रेड डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ DLF Ultima है या DLF Primus है जो सेक्टर 81 के अंदर एग्जिस्ट करता है. This is going to be one of the key development in coming times of this particular micro market. So personally, I would suggest that this particular product, you can have a look. If you want to have further information about this product, you can connect with our team. We would be happy to assist you and give you a personalized preview of this particular project. I, Saurabh Duggal, with the experience of almost 20 years in real estate and have worked with a lot of developers at a leadership level. You can see my LinkedIn profile on the screen. You can in fact visit my LinkedIn profile also. I understand the market. I have seen the bull and the bear run of the real estate market over the last 20 years. So we might be a right consultant advisor to you in your home buy.